अब हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो डेरिवेटिव्स है। हमारा जो शुरू हो रहा है अभी सेकंड लेक्चर जो है वो होगा ऑन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर खुद करना है और सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव्स में स्टार्ट कर रही हूँ और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। नाउ डेरिवेटिव्स, द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। नाउ लेट वी हैव अ फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखें इस तरह है, मैंने ग्राफ में आपको बताया है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक कर्व है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेट वी हैव अ पॉइंट P ऑन दिस ग्राफ P. On x axis the value of P is x and on y axis it is f of x. Now the tangent line from this point is denoted by a red line. It is a tangent line, ठीक है। As you know, you are familiar with the concept of slope of a line. स्लोप ऑफ लाइन आप जानते हैं कि वो आपके पास इक्वल होती है राइज ओवर रन। सो m इक्वल होता है हमारे पास, वी हैव m इज इक्वल टू y2 minus y1 डिवाइडिंग बाय x2 minus x1. दैट इज वी नीड 2 points p xy1 and x1 y1 and q x2 y2. Now we want to take the slope of tangent line, but we can't take the slope of tangent because there is only one point in common to the line and the curve, ठीक है। लाइन और फंक्शन का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है टेंजेंट लाइन पर जो कॉमन होता है, तो उसकी हम स्लोप कैसे लेंगे? स्लोप हम उसकी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हमारा जो वो है पर्पस ये है कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वी कंसिडर अनदर पॉइंट Q ऑन द फंक्शन Q. Now which is at the point Q is at a distance delta x from x. From P it is on delta x on x-axis. The value of x of the point Q will be x plus delta x and value of function y will be equal to f of x plus delta x. Now the point joining the P and Q, the line joining the points P and Q is a secant line represented by a green line. It is a secant line, okay. Now we have 2 points P and Q. We can take the slope of the secant line which is equal to हम जानते हैं कि हमारे पास स्लोप होती है राइज ओवर रन। सो द स्लोप ऑफ द secant line will be f of x plus delta x minus f of x dividing by x plus delta x minus x, which is equal to f of x plus delta x minus f of x dividing by delta x. Now if the point Q become closer and closer to P, then delta x will be smaller and smaller, and if delta x becomes so small that it is approaches to 0 but not equal to 0, then the secant line will be अच्छा जी, इसको हम इस तरह इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि एस डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डी ऑफ एक्स। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, बिकॉज एफ ऑफ एक्स हमने पहले बताया है इक्वल है वाई के। सो वी कैन राइट दिस the f of df of x dividing by dx is equal to dy over dx. अच्छा जी, this is the derivative of this so the derivative is the slope of the tangent. The above formula is the initial formula for derivatives. It is also called the change in f of x with respect to x. This derivative formula is also called the ab initio formula, ab initio or ab initio formula for the derivative. The derivative of a function is also represented by a dot on the function, a dash on the function, or a dot on the function, or 1 f of x. 1 means the first derivative of the function with respect to x. So as we know y is equal to f of x है, so f prime of x will be equal to y prime. It is the derivative of the function of f of x. Actually the derivative is derivative gives us the change in the function, the change in any function
any function with respect to some variable, as we know that the rate of change of displacement is called velocity. So we can say that the velocity is the derivative of displacement with respect to time. Similarly, the acceleration is the rate of change of velocity so we can say that the acceleration is the derivative of velocity.